Hey everyone, after so many years, today I'm going to be using my machine and there's a sewing project today. So we are going to make a cover for my glasses, you can say, or you can make it for your reading glasses too. Okay, so making at home is a lot of fun, so we are going to start with the project now. I have taken two pieces of cloth. This is little thicker one and this is little thin. ठीक है, और इनको मैंने इक्वल साइज में कट करके और ऐसे रखा है. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इसको ऑल द 3 कॉर्नर्स से स्टिच करना है एंड इवन 4th कॉर्नर भी थोड़ा सा करके छोड़ देना. मगर मैं ये सिर्फ 3 कॉर्नर्स स्टिच करने वाली हूँ और 4th कॉर्नर में से मैं अंदर इसमें डालूँगी मेरा फोम. ओके, तो फोम भी मैंने पहले से प्री कट करके रखा हुआ है. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज़ माय फोम. कोई भी नॉर्मल सा फोम ले सकते हैं. और ये जो फोम है ना, ये आपको इतना बड़ा नहीं रखना है जितना कि ये आपका स्क्वायर है. ये थोड़ा सा छोटा रखना. ओके, क्योंकि आप ऊपर से और नीचे से स्टिचिंग करोगे ना, इसको फोल्ड करोगे तो ये इसके अंदर आएगा. दैट इज़ वाई. ओके, आई विल शो यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स बिगिन.